Hello everyone, I am Abhishek. So today we are on a part 7 of learning Angular 18, and in this we will discuss about the template syntax in Angular. So it generally means empower your HTML. As we all know the HTML tags and CSS we are implementing in HTML. So empower means Angular provides us some functions, variables, events, listening, data binding, and many more things to empower our HTML. So to understand this, we need to jump in into the code. So like this. Okay. So for now, I will show you an output and this. So in this video we will go through the what is an interpolation, what is a template statement, what is a binding, what is a property binding, and what's an attribute binding. So all this is an attribute binding, again repeat, this is by mistake. So let's see, we need to correct this part. So I will remove this one, right? So let's check this. Okay, now it's all good. So first of all, we need to understand that what is interpolation. So interpolation generally means it express our text to an HTML. How we show our labels, anything, the text in the HTML. So it means the dynamic. So just we need to go through the code part, and this is again a very simple thing. I put a very simple thing here. We declared the variable underscore label with the type string and passing this simple word everyone, and this is again a second variable. So I will show you that how will we show the everyone in an HTML part. So in HTML part we use this curly braces, and this is the parameter I declared in TypeScript. So this is then this syntax, this is part is called the interpolation. So this is the starting curly braces and ending with double curly braces, and this is the variable we want, variable with the value of anything to show here, and same thing with the second parameter I use, that is agenda. So what is इंटरपोलेशन ना, इंटरपोलेशन मीन्स क्या होता है कि अगर हमने कोई भी वैल्यू, कोई भी टेक्स्ट हो हमारा, हमने वो अगर HTML पे शो करना है तो वो हम कैसे शो करते हैं. सो यहाँ मैंने एक लेबल डिक्लेयर किया, यहाँ एजेंडा डिक्लेयर किया, देन स्ट्रिंग है कि उनकी टाइप क्या है स्ट्रिंग, एंड ये उनकी इनिशियल वैल्यूज़, और हमने उनको HTML पार्ट, दिस इज़ एन HTML पार्ट, हमने उसको HTML पार्ट पे कैसे शो किया. This is the normal text. We put in h1 tag with start with the curly braces, double curly braces, and end with the double curly braces with the जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वो हमने यहाँ यूज़ किया. सेम अगेन जो हमने एजेंडा यहाँ डिक्लेयर किया वो हमने यहाँ पे ऐसे शो किया. सो दिस इज एन इंटरपोलेशन, राइट. चलो now we move to second part, what is template statement. Okay, so template statement generally means the event or methods or property we are using in HTML to engage the user. Means हम कोई
हम कोई ऐसे मेथड्स लगाएं या कोई ऐसे इवेंट्स लगाएं जिससे जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करे HTML पार्ट के साथ। मतलब कैसे कर सकता है अगर हम देखें तो इट शुड बी क्लिक इवेंट, इट शुड बी टेक्स्ट बॉक्स, इट शुड बी एनी इवेंट लिसनर, एनीथिंग। So now to do this some practical on this. Okay, so simply this is the for each loop and if statement. We will discuss this part in later videos because we are learning Angular in step by step process. So this is, as we all know, this is a simple anchor type, right? And in this I am adding a simple button. This is again an HTML part button, and with this click. Okay. And this is generally say hello, normal method. This is giving us an error. Why? Because this HTML, this component does not contain any definition of this say hello. So to have this, we generally using make this parameter is say hello part. Okay, so this is an event, this is a method. So we simply show console.log hello, sorry, hello. Okay, or to get this part I'm just using this label. Okay, and passing the value to hello everyone. Sorry, I just put it's an template statement, right? So this is end of the line. So just saving this data. Okay, now what time, what, now check the output part. Oh sorry, I put the button in the for each loop, so just I want to remove this part from here, put button here and passing some text to let me. So again we are here. So this is generally a simple button, not looking so good, but we are learning. So on clicking this button the text is changed, right? So this is an example of the template statement. So template statement क्या चीज़ होती है? टेम्पलेट स्टेटमेंट हम एक ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि हम यूज़र को कैसे एंगेज करें अपने HTML के साथ। अब यूज़र कैसे एंगेज होता है कि वो कोई क्लिक इवेंट फायर करे या किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ राइट करे, ठीक है? सो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया क्लिक इवेंट का। सो वो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल बटन रखा, उसका एक क्लिक इवेंट, ये इनबिल्ट है, मीन्स हम एक इवेंट लिसनर इसमें ऐड कर रहे हैं। सो इस जर्नी क्लिक इवेंट पे मैंने क्या किया, से हेलो एक मेथड क्रिएट किया और ये मैंने डिफाइन किया यहाँ पे और इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ रखी। तो मैंने सिंपली क्या चीज़ की, मैंने जो पैरामीटर ऊपर डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू एवरीवन थी स्टार्टिंग में जो हमने रखी थी, उसको मैंने चेंज कर दिया इसके अंदर, ठीक है? सो अगर हम इसको सेव करें तो आउटपुट में अब यहाँ पे दिस इज़ एवरीवन। नाउ जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। सो दिस इज़ हम यूज़र को एंगेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड टेम्पलेट statements. Okay, so next part is we are getting, this is bindings.
हम बाइंडिंग समझते हैं क्या चीज़ होती है, राइट। सो जनरली बाइंडिंग क्या चीज़ है? बाइंडिंग है कि हम कैसे अपने टाइप स्क्रिप्ट के डाटा को हम अपने HTML के साथ बाइंड करें। सो इट जनरली मीन्स बाइंडिंग बिटवीन द UI एंड द टाइप स्क्रिप्ट, or to get some technical words, to bind the UI with the DOM by using component or by using directives or by using models, methods, this between these two, to binding models with HTML, models with any directive, or the methods with any component. So like this. So to give a simple example of this, अब जैसे हमने एक मेथड डिक्लेयर किया, we give a definition of a say hello method. It's generally simply changing the text. Again, the label change the text in this part, right? So this is again the binding between UI and TypeScript. So in TypeScript we are declaring, and the HTML we are binding this using the interpolation. So this is called bindings. This is very simple. And one more example, say hello word. Again we give the definition of say hello word and using this in HTML like this. So this is called bindings, right? And this is again we are changing, and in the binding part, if we understand, binding part, right? So binding have three options. The first one is text interpolation. Okay, the first one is text interpolation. Again, sorry, again commenting this. And the second part is the property binding. Okay, and the third one is event binding. Okay, and the fourth one is, sorry, it's a two-way binding, right? So the binding generally means we have two things. First one is target, sorry, source and target, or we called as target template, right? So this one. So this is, and if we want to make a good uh, coding structure, we have to remember 2 points. The first one is make a short expression. Quick execution. So generally we are saying that make a short expression. If we are binding in TypeScript with this HTML part, we need to use a short expression. Means declare the variable's name not so long that it will use some more memory.
make it a small one, naming small one, and quick execution means uh, we need to declare the variables or we use the methods. Example, a say hello method in a very simple way that it will execute quickly, not in the hierarchy way, calling one method. In the first method we are calling the second one, in the second we are calling the third one. So not like this. Make it a very simple code. So uh, again I'm saving this. This is only a text. This is not give any effect in the HTML. So let's move this part. So the next one is the property binding. So again, what is the property binding? Property binding means that in an Angular HTML, we are using some tags or directives and to move the data from one direction, means moving value from component property to target property. मीन्स अगर हम कोई वेरिएबल, कोई मेथड, कोई ऐसी चीज़ जो हमने एक टेम्पलेट में डिक्लेयर किया है और हम उसे मूव करना चाहते हैं किसी और टेम्पलेट में, या किसी और डायरेक्टिव में डाटा मूव करना चाहते हैं, या किसी HTML की हम कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग. सो चलो हम इस लेट्स मूव टू द कोड पार्ट, राइट. So again, if we look into this part, to give such example, I need to create one component, generate component, template property binding standalone equals to true. So this is the command that we are creating. That ng means again an Angular part, and the G means we are generate, C means a component, and this is the component name we have, and this is optional property to make it a standalone, to make, okay. So by pressing the enter, we got a new template here, right? This is the template this is the template we have. Now take an example of open a TypeScript. In the import part, I generally write down that I want to use template property binding component, right? This is again, in the early videos I saw this, we are injecting template property to use it in this template, right? Again, this is a selector we are using. So I just copy this selector and paste it here, okay, simply. And in this part, in this HTML, I'm just making a very simple, not so complex, making this part as parent value. So again, this is given error that this component does not get definition of the what is the parent value. So for first step, I am just declaring a parent value to be a string, and which is equals to blank for now. So not blank, I just giving a initial, again simple hello, okay. So this part parent value, okay. So in front end, if you look into this, we have this template property binding works, means we are calling this template here, okay. So in an HTML part, I haven't saved this, we move to an output, then this is a simple hello, okay, simple hello. So simple hello, we put the text here, okay. And right now I want to
declare a input. Okay, input values to, sorry, make it a name. I'm just commenting this part, right? And I'm passing this as a string. Okay, and initial value to, again passing the simple value, this value to initial value, and like this. So if we check the output, this is again a same value. But now what the change we made in this template, we are declaring parent value as input. We will discuss about this also in the later videos, and what the changes in Angular 18 we have for currently. To show what is the property binding, I am giving a very simple example that for this template, that is a template property binding component. This is an its property. Property means it's a string, right? And we are using part here. Now what I am doing, I'm simply what copy the name of this parent value, right? Pass it here and make it, and passing this value here, right? And when we save like this, so what will be the output? Let's check. Output is everyone, right? Now make some change. Now check this. If I am in current part, but if I click on this button, then what will happen in this part and in this part? So let's test it. Click me. So the text will affect here also in the parent, and this is a in the child template also. So this is called the property binding. There are two ways to bind the properties. Okay, the first one is with an square bracket. What is the square bracket means? Square bracket means that it will bind the value or the variable we are passing. This is the variable, and the value may be, should be a dynamic value. It may get changed or not. It sometimes it will get changed if the user changes this parameter value, and if not, then it will not change. Okay, and the second way is I'm just passing this parameter without square bracket, and I'm passing hello. So what will happen? Let's get into this part. So this is hello. Now what will be the difference? So what is the difference? The difference is that this is not a dynamic now. This is not a dynamic now. This we are simply passing a string value. Okay. So this is called the property binding. So again, small recap. So what is a property binding? So प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या चीज़ होती है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है कि हम मतलब अपनी टाइप स्क्रिप्ट को HTML के साथ बाइंड करें, और HTML टैग की किसी प्रॉपर्टी के साथ बाइंड करें, इनबिल्ट HTML प्रॉपर्टी, और पासिंग, और हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू सेंड करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी के थ्रू। प्रॉपर्टी डायरेक्टिव्स भी हो सकती हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं, इनपुट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। जो मैंने अभी रिसेंटली आपको एक एग्जांपल दिया वो एक इनपुट पैरामीटर के एग्जांपल के साथ रखा उसको। सो हमने क्या किया, हमने एक जनरली एक कमांड मैंने क्रिएट करके एक टेम्पलेट बनाया था मैंने। ओके, इस टेम्पलेट में मैंने एक इनपुट पैरामीटर पेरेंट वैल्यू लिया, स्ट्रिंग, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने सिंपल हेलो रख दी। नाउ मैंने इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट में यूज़ किया बाय इंजेक्टिंग दिस कंपोनेंट टू इंपोर्ट।
इंपोर्ट में मैंने उसको इंजेक्ट किया। नाउ मैंने क्या चीज़ की कि मैंने फिर इसमें उसके एच टी एम एल सेलेक्टर, अगर इस टेम्पलेट का आप HTML सेलेक्टर देखोगे, सो वो मैंने क्या किया, उसको मैंने यहाँ पे एज एन HTML टैग यूज़ किया। अगेन मैंने इसकी पेरेंट वैल्यू सेंड की। पेरेंट वैल्यू पहले मैंने डायनेमिक रखी थी, राइट, एंड मैंने इसको एक पैरामीटर के साथ लिंक किया था लाइक दिस। तो उसकी आउटपुट क्या आई थी, एवरीवन, इनिशियल वैल्यू दिस एंड दिस, व्हेन वी क्लिक। तो जब मैंने क्लिक किया था तो इसका भी टेक्स्ट चेंज हुआ और इसका भी टेक्स्ट चेंज हुआ। और दूसरा तरीका मैंने क्या किया कि मैंने पेरेंट वैल्यू को एज अ सिंपल स्ट्रिंग की तरह पास किया। तो इसने क्या एग्जांपल दिया कि दिस इज़ हेलो। नाउ जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही। जो टेम्पलेट मैंने एक और नॉर्मल सिंपल सा बनाया, क्यों? क्योंकि अब ये स्टैटिक है, ये अब डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक मतलब डायनेमिक कब होता, जब मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया होता और यहाँ पे कोई वेरिएबल जो हमने टाइप स्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है उसको पास में करता यहाँ पे। ये होती है हमारी प्रोसेस। So now we discuss about the attribute binding. So attribute binding means we are set the value of attribute directly of an HTML tag by using the code like this. So we are moving here to learn. I am just passing in span and giving the text here, attribute binding. So the first part is I am passing attr dot color attribute dot color equals to attr color. Sorry. Now again att, we are not getting the definition of this here, so I am declaring a variable of string and passing it to lbl text. Oh sorry, not like this. So if we need to inspect this element, we are getting the color green, not have any effect on this color green. So this is an attribute, color is an attribute of span. Okay, and now one more thing, this is an attribute. Okay, now I need to bind a class dynamically, means class dot lbl label green and lbl green when, okay, class lbl green with name. Now I need to check lbl green, sorry, lbl green part here, and this is a string, and this is, sorry, this is the string and green color. Okay, saving this and saving this part also. Sorry, I haven't passed the parameter here. I'm not passed the parameter, so I just copy this code and pass to this part. Okay, now if we go to the output, this inspect the element, we have the class lbl green and the color green is an attribute, color attribute. This is, we are binding the class lbl green. Now if I give the class definition here, okay,
So what it will do, it will change the text color to green color. So we are binding a class attribute to this span. Okay, so this is a simple class attribute. Now if I need to bind a style, of this span, so there are 2 to 3 ways. Okay, again an example. Span, sorry, style, attribute binding. Okay, so how can we do that? I'm just style dot color equals to green. So an effect like this. Oh sorry, this two text come side by side span. To make it more, I just in the BR here. So effect like this. Okay, style dot color. To make it different from the previous one, I just need to change this to red color. So this is, we are making a style color to, we are making style of this span, and what is the style is color to red color. Now the second way, the second way is to apply multiple styles. So I'm just passing a style here and passing LBL style part. So we are not getting any definition of this, so I'm passing like this, and here this is again a string for us, and equals to, and so I will pass a font size to be 100 pixel. Oh sorry, to make it a 24 pixel. Any effect in the output? So oh sorry, any effect, we are getting the font size also, and we are getting the color also, right? Style. So this color part, so color part, style color part is coming from here, and again the other style is coming from here. So to use multiple properties, font size equals to this, and make set any other property, and if we pass to font size and any other property, I'm not getting them, or if we put any margin, so I'm just padding, passing up padding to 10 pixel. So any change in the output? Yes, we are getting a change here, so this is padding. If we remove this, we will get to know this part, span. Okay, we are changing span, is moving all part. Okay, so we are setting padding. So this is generally a attribute binding of a style class. Okay, so little bit overview of attribute binding. एट्रीब्यूट बाइंडिंग क्या चीज़ होती है? एट्रीब्यूट बाइंडिंग होती है जब हम किसी HTML टैग की कोई प्रॉपर्टी को हम डायनेमिकली सेट करना चाहते हों या प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हों, सो तब हम उसको करते हैं, राइट? तो उसका सिंटेक्स कैसे होता है? उसका सिंटेक्स होता है सम लाइक दिस, attribute color class. This is, we are setting a class label color to
लेबल कर, अब हम इस एट्रीब्यूट की डेफिनेशन हमने यहाँ रखी, डिफाइन यहाँ किया है, उसको इनिशियल कलर दिया है इसको। उसी तरह हमने सेकंड एग्जांपल क्या लिया कि अगर हम स्टाइल सेट करना चाहते हैं किसी स्पैन का, और दिस ये है सिंगल, कोई सिंगल स्टाइल हम सेट कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग पास की है। और जो सेकंड मैंने एग्जांपल दिया वो हम इस पूरी स्पैन को हम एक स्टाइल लगाना चाहते हैं, और इस स्टाइल को हमने एक वेरिएबल पास किया है, और वेरिएबल की डेफिनेशन कहाँ है, वो यहाँ पे है। सो दिस इज, हमने क्या किया, फॉन्ट साइज एंड पैडिंग। सो इन सब का इफेक्ट हमें यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिखा। सो दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट बाइंडिंग। ओके, so 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 for today, thank you so much for watching this, and I love to get feedbacks and suggestions, and we will move to the next part in the later videos with the more properties of template. We have example events, any directives, anything customization. So thank you for watching my video, and if you give me more suggestions, then I will put more effort to make more videos. So thank you so much.